प्राप्त हो और कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा देना। और हमारे सर का भी एक हमेशा से एक विजन रहा है कि ना सिर्फ अच्छी शिक्षा लेकिन उनको एक इंटरनेशनल लेवल का एक जो एजुकेशन, हमारा जो टैगलाइन आप लोगों को पता होगा क्या, क्रिएटिंग ग्लोबल सिटीजन्स, उसका ये मतलब one of the leading organization which provides us technology based tools for learning, teaching and assessments. Now I would like to present a demonstration which is going to showcase our students development and learning outcome through our Hi, I'm grade 3. Today I'm going to do science experiment. Lesson light and shadow. Now I am talking about light. Go faster than the other two hands. Now let me show you how to read the time. Konnichiwa. Watashi no good afternoon. Watashi no namae wa Sumaya. You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। जो एनईपी जो आपके यहाँ जो सिलेबस चल रहा है इम्प्लीमेंट किया गया, बच्चों में हमने देखा बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए, लूडो खेलते हुए पढ़ रहे हैं। हाँ। तो बहुत कितना फायदा देगा ये बच्चों को, उसके बारे में बताओ। गुड आफ्टरनून टू द व्यूवर्स ऑफ खबर फेस टू फेस एंड काशिफ टाइम्स। और आप लोग भी इधर आए हमारे स्कूल में, इसके लिए आप लोग हमें धन्यवाद देता हूँ आपको। हाँ, एनईपी जो अब आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, उसका गाइडलाइंस जो आया है, हम लोग ने उसको लास्ट 2 इयर्स से हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और जैसा हम लोग ने यहाँ पर सिलेबस चेंज किया है, हमारा स्टेट बोर्ड होते हुए भी हम लोग ने यहाँ पर सीबीएसई का करिकुलम अप टू 5th स्टैंडर्ड हम लोग ने अडॉप्ट किया है। उसकी वजह से हम लोग काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं हमारे बच्चों में, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना, खाली टेक्स्ट बुक का नॉलेज नहीं, लेकिन एक बच्चों को एक स्किल डेवलप करवाना पढ़ाई के साथ साथ, वो हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा बदलाव देख रहे हैं हमारे बच्चों में। आपके बच्चों में बहुत ही अच्छे एक हैबिट है, जो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। फोनिक प्रोग्राम हमने 7 साल पहले, हमने 7-8 साल पहले स्टार्ट किया था केजी में। तो फोनिक के वजह से क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो बच्चे लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो साउंड सिखाने के बाद फोनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया गया प्री प्राइमरी और प्राइमरी में, जिसके बाद बच्चे लोग अभी ऑटोमेटिक अपना रीड करते हैं। आप कोई भी उन्हें टेक्स्ट दे दीजिए वो रीड कर सकते हैं वो। तो खाली क्या है कि रट्टा नहीं मारते हैं, ये है। और ये नया करिकुलम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेके आए, क्योंकि दे हैव टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। अगर मैथमेटिक्स का कोई उन्होंने कंसेप्ट पढ़ा है, एडिशनल कंसेप्ट पढ़ा है, तो एक्सपीरियंस। हम तो ये 1996 से हमने हमारा करिकुलम को हमेशा एट पार रखा बाकी स्कूलों से। हमने ये नहीं देखा कि हमें स्टेट बोर्ड स्कूल है, एडमिशन आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। हमने ये ट्राई करता रहा, हमेशा कोशिश रही हमारी कि समथिंग बेटर शुड बी डन, व्हाट अदर स्कूल्स, द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं। वी ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर स्कूल्स। हम ये नहीं देखते हैं कि अभी एसएससी बोर्ड इधर पे फीस इतना कम है, ये क्यों करने का। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो करिकुलम हम यूज़ कर रहे हैं अभी इधर, ये करिकुलम ऑकेट इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, इनके सारे ब्रांचेस में यही करिकुलम चल रहा है अभी, वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। हमारा जो सेकेंड ब्रांच है कोल्हापुर का, जो हमारे 2 ब्रांचेस है कोल्हापुर में, हमारे दोनों ब्रांच कोल्हापुर में यही करिकुलम चलता है। वो एक तो हमारा सीबीएसई स्कूल है, लेकिन यही करिकुलम मैंने इसी सबसे कम फीस में मैंने कोशिश किया कि हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। और इसका ही आप लोग ने एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे बताने के या बता दिया होगा आपको, आपने देखा होगा कि वो लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। सर, पेरेंट्स का कैसा रिस्पांस है? बहुत ही अच्छा एनईपी का जो सिलेबस है इसको लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अगर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जिनको
कुछ बातें का समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि ट्यूशन टीचर्स हमें नहीं मिल रहे हैं आपका सिलेबस पढ़ाने के लिए। थोड़ा लेवल हम लोग ने हाई किया है एजुकेशन। तो जरा ट्यूशन्स का प्रॉब्लम है, और मैं पेरेंट्स को अपील करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि आप लोग को सिलेबस को ट्यूशन टीचर से पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग स्कूल में उसको पूरा कर रहे हैं। उसका ERP है, ERP का आप लोग उसका उपयोग करिए। ERP नहीं हो रहा है तो आप लोग टीचर से या हमें संपर्क करिए, यही मैं आपको अपील करना चाहता हूँ उनसे। और रोट लर्निंग, रट्टाफाई करने का काम बंद करवा दीजिए। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे यही बोलना था, क्या आपको, जैसे आप लोग को पता है कि हमारा स्कूल आज एक अराउंड 32 ईयर्स से वी आर रनिंग अ स्कूल इन मालवनी। और जैसे हमारे डैडी ने ये स्कूल की शुरुआत की थी इन द ईयर 1990, उनका एक ही मकसद था कि इस एरिया के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा देना। और हमारे सर का भी एक हमेशा से एक विज़न रहा है कि ना सिर्फ अच्छी शिक्षा, लेकिन उनको एक इंटरनेशनल लेवल का एक जो एजुकेशन, हमारा जो टैगलाइन आप लोगों को पता होगा क्या, क्रिएटिंग ग्लोबल सिटीजन्स। उसका ये मतलब होता है कि हम लोग ना सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ाते हैं, ना सिर्फ हम लोग, लेकिन हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में उनको नॉलेज देते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी वर्ल्ड स्टेज पे कहीं भी खड़े हो जाए तो उन लोग कंधे से कंधा मिला के कहीं भी एक दूसरे कंट्री के बच्चों के साथ उस लेवल में उन लोग बात कर सके, उन लोग को वो कॉन्फिडेंस आ सके। तो हम लोग का हमेशा से एक संकल्प रहा है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल का पढ़ाई हम लोग इस स्कूल में दें। इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिलते आए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल में हम लोग को ये IDA अवार्ड मिला है। ये सिर्फ टॉप 10 स्कूल्स को मिला है पूरे इंडिया में। ये है एम्पावरिंग लर्नर्स फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप। मतलब जो हम लोग जो इंटरनेशनल पढ़ाई करवाते हैं उसको उन लोग ने रिकग्नाइज करके, और टॉप 10 स्कूल्स को उन लोग ने टॉर्च बेरर्स करके हम लोग को एक सर्टिफाई किया है। मतलब हम लोग यहाँ पर सच में एक अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग ने रिकग्नाइज किया। और उसके अलावा हम लोग को ये हाल ही में ये अवार्ड मिला सर जहाँ पर गए थे, ये अडॉप्टिंग फ्यूचरिस्टिक लाइफ स्किल करिकुलम। मतलब हम लोग ने एक फ्यूचर को देखते हुए हम लोग ने यहाँ एक करिकुलम में बदलाव लाके और एक लाइफ स्किल, जो बच्चों को एक स्किल मिल सके पढ़ते हुए। और लास्टली हम लोग को फिर एजुकेशन वर्ल्ड ने भी हम लोग को एक अवार्ड दिया है क्या, बजट स्कूल, बेस्ट बजट स्कूल सुपर 30 में। महाराष्ट्र रैंक आप देख सकते हो 10 पे है, मुंबई में हम लोग 7 नंबर पे है। तो ये सब मैं पहले तो सर को मैं कंग्रेचुलेट करूँगा क्या, उनके मेहनत से और उनके जो मार्गदर्शन से आज इतने सालों से ये स्कूल चलती आ रही है। और उनका हमेशा से एक विजन रहा है कि बस मालवनी के बच्चों को जो बेस्ट हम लोग दे सके हम लोग देते आए हैं और आगे भी हम लोग देते आएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, सेंट पॉल हाई स्कूल क्यों सबसे अलग है? क्यों? इसलिए क्योंकि सेंट पॉल हाई स्कूल जो सोच है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, वो ग्लोबली है। वो सिर्फ नेशनली नहीं है और लोकल वाइज नहीं है, उनकी जो सोच है वो ग्लोबली है। तो वो क्यों है, हम बात करते हैं क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। किस तरह का यहाँ पर करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, हमारे साथ सेंट पॉल हाई स्कूल की टीचर है, उनसे बात करें। टीचर, तो आइए बात करते हैं हम सेंट पॉल हाई स्कूल की नसीम टीचर से। नसीम टीचर, जो ये NEP है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आप लोग क्या बच्चों को एक्टिविटी सिखा रहे हैं? Actually, national education policy is a kind of a policy which is more focusing on holistic development, integrated, engaging students with fun-loving activity. Okay, so because of this, we have introduced all these things in our curriculum by incorporating technology and adopting digital learning system. So just to make sure that our students are learning in a more playful way of learning, activities we have
we have experiments, we have science activities, so that it motivates children more. In a more playful way, it motivates children to concentrate on the activities and to learn more in this classroom. What is the activity which you like most in this NEP? Activities are like, we have reading, we have experiments, we have math kit activity, because earlier if you have seen that we are only learning math through classrooms, through books. Right. So now we are learning math through a kit activity. So for example, if you want to learn addition, so we have templates, we have blocks, we have hundreds, tens, so that we can keep it together and we can learn in a playful method that how to add the numbers, how to subtract the numbers. That is what we are going to learn in an NEP. That is called a play-way learning and holistic method. So this is already implemented We have in already this school. implemented. Yeah. Yes, we have already implemented in our school. For which standard? It is from 1st to 5th. So now as our school has gone from state board to CBSE board, we have introduced CBSE board in our curriculum. So for that we have dealt and we have collaborated with one of the leading organization which provide us all the teaching based materials, technology based materials for learning, teaching and assessments. So what is the other activities in this NEP which is unique for the student? I would say that the uniqueness in science. So earlier, when I have learned and when I have did my board, so we used to go to laboratory only when we used to go, we used to reach till 8th, 9th and 10th. But now even the 3rd, 4th and 5th standard students can learn the experiment in the classroom only. So we just have to not learn the theory, we just have to focus more on the practicality, that how we can mix the chemicals, how we can see the light and shadow. All the experiments are being done in the classroom by the teacher only. So that all things are available with us. So Nasim teacher, you have already implemented NEP in primary section. So how you manage the time, because the time for education is also there, for activities also there. So how you manage the time for the children? This is not an activity which is separated from the education. We have the activity which is in line with the education. So for example, if we are talking about reading, literacy and numeracy. So in literacy we focuses more on the phonetics. If we can say, we are not reading CAT cat. We are reading it with the phonetic sounds. So that is what is in line with it. When we are talking about the time, for the same time you are providing education also. That syllabus you have to complete. That already we have to do. And other, this is extra. So you are how you use this time? You are using this in extra day. No. It is we are giving and allotting everything a proper time. So for example, if we are studying, it is with a digital technology. That also focuses, that also taking the consideration of NEP policy. NEP policy says that we have to digitalize ourselves. So when we are reading and when we are learning a literacy part, we have a PPT in front of us. We have videos in front of us. So that is what makes us digital. For digitalizing, you are saying, so they have to use mobile for reading news. So they are using newspaper. What they use for reading news, newspaper or looking at the computer or mobile for reading news? I would say both of them are useful. Newspaper reading is also useful, and what we do as a teacher, we cast our mobile through the screencast app, we cast it on the television. So whatever we are reading, the children can also see and read it from the television. Okay, Nasim madam, when this will implement in all school, NEP? New Education Policy 2020. So when will it implement in all school? Sorry, can you please repeat? It is not implemented in all schools now. It is not implemented, but our school has already. Will implement in future? Yes, definitely it is going to implement in future in all the schools. It is a policy, so we have to implement it. Okay. At last, what you can give the message to the parents?
I just want to give a message to the parents that as we have changed our teaching method from state board, we have gone to CBSE board. So the children, the teachers and the school is striving very hard to make your children global. Okay, to make them advance. So I also request all the parents to give the equal support and cooperation so that we all work together and make our students in a globalized. Okay, they should be global, they should be learning in a very good way. So I want their cooperation. Thank you very much, sir. Welcome. For being with us. Our school, I will be presenting the vision of our sir. Our respected principal sir, Mr. R.G. Rao, has a vision to create global citizen, to serve the nation, and the nation serves the world. Along with this vision, we have also taken NEP into consideration. By this, we focuses more on holistic, integrated, engaging, and enjoyable learning. For this, we have developed our curriculum system by incorporating technology and adopting digital learning system. The main focus of our school is to give affordable and quality education, which is also one of the sustainable development goals. In order to make this happen, we have collaborated with one of the leading organizations which provides us technology-based tools for learning, teaching, and assessments. Now, I would like to present a demonstration which is going to showcase our students' development and learning outcome throughout the year. I would like to call upon Ryan from grade 1 who will be reading a comprehension from a reading book. Thank you. My name is Ryan Sheikh. What are you doing? I am reading this passage. Chicken and chips. Chandra has a pet chicken. The name of the chicken is Chilli. Chilli and Chandra live on a farm. Chilli loves chips. Chandra loves chops. When Chandra has chops and chips for lunch, she gives a lot of the chips to Chilli. Chilli the chicken chuckles. Chandra chews the chops and Chilli pecks the chips. After lunch, they have a nap. When Chandra has an itch, she scratches it for it. But when Chilli has an itch, she likes it very much. If Chandra will scratches it for her. Thank you. The passage very well. This is why that we have introduced phonetic sounds in our curriculum. So just to make sure that our children should read in a very fluent way. Now I would like to call upon Liba from grade 1. She will be performing a math kit activity. Good morning everyone. I am here to show our math kit activity. My topic from our kit activity is number building and representation by grouping them. So let's see. These are number cards. This is 100 blocks. These are tens blocks. These are ones blocks. Now let's read the numbers using these blocks. It is 184. So I will read it with the help of these blocks. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 181, 182, 183, 184. These are 184 blocks. Thank you. Now I would be calling Shifa and Navishka from grade 2. They will also be performing a math activity which will be the introduction of mental sums. Thank you. Good morning everyone. Myself Shifa Khan. Myself Vishwakarma Navishka. We are going to do an activity based on mental sums.
I got 5. I got 3. Start this. I got 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What comes next in the series? 567, 569, 571, 573, 575. I got 3. I got 2. 1, 2. Match the correct shadow. Shadow. Start with. I got 5. I got 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subtraction. 3 minus 2, 1. 8 minus 1, 12. I got 5. I got 1. 1. 8 plus 3, 8, 9, 10, 11. 11. 7 plus 3, 7, 8, 9, 10. 4 plus 3, 7, 8. I got 1. Starting. 1. Well done, Shifa and Navishka. This is what I was telling you about, that the children are learning math in a very playway method and they are enjoying it a lot. Now I would like to call Nabiha Sheikh from grade 3 and she will be reading a newspaper. More horrific details in train shooting charge ship. Forced burqa-clad lady to chant Jai Mata Di exclusive. Besides the 4 murders charge sheet against RPF Constable Chetan Singh details the trauma of surviving passengers Samiullah Khan and Faizan Khan. The 1,200-page charge sheet filled by the government trip with police, GRP in connection. Could see that this girl is reading today's newspaper in such a fluent language. Now I would like to call upon Ariba Sheikh from 3rd A. She will be performing a science experiment. Good afternoon everyone. My name is Sheikh Ariba and I am from grade 3. Today I am going to do science experiment. Lesson light and shadow. Now I am talking about light. Light is a type of energy that makes it possible for us to see things around us. Light travels in a straight line. White light consists of 7 colors. The light does not pass through all the materials. Now, I am going to do an experiment on light. Now, I am inserting my torch in this pole so that we can see the light is going perfectly. It shows that the ray of light passes straight. If I will insert this block in this box so that we can see the block does not allow the light to pass. If I will remove this blocksmith part and then we can see this light is going perfectly. And if I will insert this yellow plastic card, so we can see that the card does not allow full light to pass. So this is known as translucent object.
insert this white transparent paper so that you can see the paper is allowing the light to pass easily. This is known as transparent object. In this experiment, we learned that light has three types. Light passes in three types: transparent, translucent, and opaque. Thank you. Well done, Ariba. Now I would like to call upon students from grade 3. She'll be performing a math activity from the kit. Good afternoon. Myself, Gave Mariam. I study in grade 3, and in our school we learn different topics by performing various activities by ourselves. Today I am going to perform a math activity based on time. There are two types of clocks which we use in modern times, that are analog clock and digital clock. On the face of analog clock, we can see numbers 1 to 12 and 3 hands, that are minute hand, second hand and hour hand. Minute hand is the longest hand which indicates minutes. Hour hand is the shortest hand which indicates hour. Second hand is the thinnest hand which moves faster than the other two hands. Now let me show you how to read the time on the clock by performing an activity. First digit is 8. My second digit is 2. And my third digit is 0. So 8 is the hour and 20 is the minute. So the time on the clock is 8:20. My first digit is 4. My second digit is 2. And my third digit is 5. So 4 is the hour and 25 is the minute. So the time on the clock is 4:25. Thank you, Mariam. Now, along with this curriculum, we also focuses more on international learning program. In this program, we have various kinds of activities and competitions. We also teach our students by exploring different countries, the different languages, and the different numbers. For example, I would like to show one of the country, Madagascar country, in which a student is going to say Malagasy numbers. Good afternoon, everyone. My name is Khan Almit Altaf, and I am studying in St. Paul's High School in grade 3. And today I am here to say Malagasy numbers: Ire, Roa, Talo, Ifatra, Dimi, Irina, Fito, Walo, Sivi, Folo. And now I am going to say the magical words in Malagasy languages. Salama, hello. Misa Otra, thank you. Miala, Sini, sorry. Fitani, please. Thank you. Now, I would like to call Sumaya. She will be, as we have explored Japan country, so now she will be saying the language of Japanese. Konnichiwa, good afternoon. Konnichiwa, watashi no, good afternoon. Watashi no namae wa Sumaya. Arigato. Our children has performed tremendously well in all these activities. They have read the newspaper well, the passages well, experiment is done in a very good way, and the maths activity is also done in a very innovative way. Now, as a teacher, I really like to share my fruitful experience that our school has introduced a modern teaching method in which we focuses more on making the students' intellectual behavior. Okay, we are focusing more on improving their intellectual behavior by using different activities and innovative ideas. Different activities
sticker-based activities, the math kit activity, experiments, and the technology in the school has increased the curiosity in the students to learn the things in an innovative way. It also motivates the children to learn in a playway method. On the contrary, it also helps the teachers as well to manage the classroom in a more effective way. At the end, I would like to say that our school and our education is complying with NEP 2020. Thank you. I would like to say our education complies with NEP 2020 and the whole credit goes to our principal sir and Vijay sir. Without them, it wouldn't be happening at all. Thank you.